Good afternoon, everyone. I, Anand Abhingya, practicing Company Secretary of DP Abhushan Limited, extend a warm welcome to all the participant, management team, and investors in the discussion on company's operational and financial performance. I would request our team member to start the presentation. Over to you, sir. Hello, everyone. I would like to welcome you all. So before starting the presentation, I would just like to give a glimpse about what all company is all about. And in this presentation, we would cover all the financial and the operational performance as well as the future growth prospects of the company. So I would be sharing the screen. And I hope the screen is visible. Yes, it's visible, sir. Okay. So this is the investor presentation, what our team DP Abhushan has made to all the investors. It would cover all the broader prospects of the company. So a welcome note to all our customers, stakeholders, employees, each and every family and associated with us. We welcome you all and we hope for a successful and a long journey with you. The contents of the presentation would cover all these points. So I would just like to go a bit fast on this. So the overview of the company. So what does DP stands for? DP is not just a brand. It's a 82 years old legacy that is held by the fourth generation of the Kataria family. The journey began in 1940 in a small town in Ratlam in the state of MP. And from 2003, the partnership firm got converted into a limited company in 2017. And then the company came with an IPO on SME board of NSE. At the start, we started with a one store in Ratlam. Today, the company has grown into the largest Central India jewelry retail chain with a presence in Ratlam, Indore, Udaipur, Bhopal, Ujjain, Bhilwara, Kota, and Banswara. These are the few objectives and the milestones that will give a brief history of the company. So 1940 was the time when DP came into existence. Then 2010, we started with a showroom in Indore. And currently in 2022, the new showroom opened in Banswara and the later part in the fourth quarter of 2022. So these are the few objectives and milestones that will give a timeline about how the company has functioned in the past few years. So before starting the presentation, I would like to just give a brief on how the showroom looks like. Anand, is the video audible and visible? Yes, it's completely okay. Okay. I think voice is not coming out from the video.
Hello. अरे यार वॉइस नहीं आ रहा. ठीक है चलो छोड़ो. So coming back to the presentation, Anand, Yes. is the slide visible? Yes, slide is visible. Okay. So this is the management composition of DP Abhushan. So in person we here have Shri Santosh Kataria, Managing Director of DP Abhushan, and all the management team is here. Shri Ratanlalji Kataria, who even at the age of 75 plus takes an active involvement in the business and is a mentor to fourth generation as well. These are some achievements in the recognition on the DP part. Some milestones which we have achieved. So in this year, we have crossed the turnover of 1700 crore plus. We have 500 plus human assets on 8 plus locations which we operate. 20 lakh plus families are associated with us. And here we are the fourth generation promoters. And the footfall to conversion ratio, which we are very proud of, is 85 to 95%. So it is said that because of the legacy and because of the honesty that we have carried in the past years, the customer to conversion footfall ratio is one of the best what we have achieved. So these are some of the proud moments. The first Central India jewelry company to get listed on NSE, and we have also received the best promising jewelry award by Indian Bullion and Jewelry Association. These are the store geographics of all the 8 stores. So Indore showroom is our flagship showroom with 15,000 plus square feet, and all the other showrooms are around 4 to 6,000 square feet. These are some of the glimpses of how the showroom looks like. Ratlam, Indore, Udaipur, Bhopal, Ujjain, Bhilwara, Kota, newly opened Banswara showroom. These are some of the pictures of the showroom from inside. Our products collection designs consist of all class of gold jewelry, diamond and silver jewelry. This is the overview of the jewelry sector. We are all aware that the jewelry sector plays an important role in boosting the GDP for Indian economy. Apart from that, with increasing wedding culture and increasing spending on discretionary products, मुझे लगता है कि ज्वेलरी की डिमांड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती रहने वाली है. So we don't see any negative side in that. So this is the journey of DP Abhushan. In 2017, the company came with an IPO of 16 crores with an issue price of 28, where the market cap was 63 crores. The current scenario is that the market price is around 440 and the market cap is 900 crore plus. These are all the price metrics of last 5 years that DP has achieved. These are the key financials of the DP Abhushan at a glance. In 2017-18, we were operating 4 showrooms at a revenue of 60 crores, and currently we have 8 showrooms with an operating revenue of 1731 crore. The same impact you can see in the bottom line as well. Our customer policy and principle. It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you will do the things differently. So DP is a long legacy of 4 generations. So that's why our customer to walk-in conversion is one of the highest, because we think every generation has a legacy to carry on and the reputation of the forefathers that they have built towards the customer. Therefore, we stand strong leader in footfall to conversion ratios. As we all know that there was a surge in the prices in gold prices in past 2 financial years. So there is normal belief that सोने के भाव जब ज़्यादा होते हैं तब ज्वेलर्स ज़्यादा कमाते हैं. In our scenario, the growth is not only in the terms of value, but also in terms of volume. Whether you mark the growth in gold, jewelry, diamond or silver, we have delivered the volume growth in all the 3 categories in all the stores. The chart shows the picture of the same.
Ujjain, Bhilwara, Kota and Banswara were operated and opened in financial year 2021 and 2021. Therefore, the charts are not comparable. This is the store matrix. Our average sales per square feet represents customer loyalty. Conference Our average sales per square feet represents the customer loyalty and the trust DP has earned in last few years. Consistency is what matters to us the most. This chart depicts the consistent approach towards the key to success. Our turnover and PAT has been consistent in the past 5 years. These are the key important ratios that I would like to highlight. When it comes to churning the inventory effectively, DP Abhushan stands best among all the retail jewelry companies. This is because of the years of experience DP have earned in understanding the customer needs and requirement. When you see the DP Abhushan inventory turnover ratio is the best among its peers. The company effectively uses its assets to produce sales, and therefore our asset turnover ratio is also highest when compared to peers. This is the peer analysis. The data till December 2021 has been updated. PAT and the revenue growth, we have delivered the highest when compared to the peers. These are the growth prospects of the company. The company expects to achieve the same store sales growth of around 22% of upcoming years on the basis of the past performance and the future growth. And the company plans to open 2 showrooms with a potential of 200 crore top line every year, with 50% utilization, that is around 6 months of operating in first year and 100% utilization in next year. The company plans to open its roots in Central India by entering into the states of Chhattisgarh and Gujarat and expanding its feet in MP and Rajasthan. And that would drive the economies of scale. Being our offices and showrooms located in Tier 2 and Tier 3 cities, our staff cost is low and optimum utilization of the resources is done. Our business outlook for the jewelry and the gold prices remain optimum, like strong underlying momentum looking to consumption analysis despite the strong short-term volatility. We can see the short-term volatility in upcoming few months in regard to the gold prices, but the jewelry demand we see there will be a boost post-COVID scenario and increasing festive and wedding season buying. This is the business ambition and the vision of the management of DP Abhushan. The business ambition says that the expansion of 8 stores in current year to financial year 25, we will be operating with 13 plus stores, turnover 1730, and we target and we ambit to achieve 3000 crore plus turnover by financial year 25. Along with that, the vision of the management is to become the Central India's most loved and trusted jewelry brand. And the mission is to create the wealth for all the stakeholders by building a business based on honest and transparent approach to the customers and contributing to the society at large. This is the mode what makes DP Abhushan very different, like natural hedging. The company has been following the natural hedging policy since many years. Because of this, because of the natural hedging, we are always able to maintain our cost of inventory lower than the market price. Locker scheme policy, where it replaces the customer's old inventory with the new inventory, and after 11 months without or with concessional making charges, which is a unique proposition across Central India. We have a focused region approach. Because of the focused region approach of the Central India, we have to incur lower of our marketing expenses, and that also adds to our operating profits. Lower operating cost. As I told earlier, that the company operates in Tier 2 and Tier 3 cities, hence making and operating charges are always lower. And also the logistic movement of inventory is easy and economical among the cities in which the DP operates. These are our growth pillars, our quality, expansion, sustainability, and high customer satisfaction. Our SWOT analysis, no company gives its own SWOT analysis. But here we have taken a step ahead of other companies, giving our own SWOT analysis. Our working culture at DP Abhushan,
and thank you. And thus summarizing the whole presentation, I would like to say that DP Abhushan's growth journey has just begun and it has a long way to go. The presentation is available on the company's website, and also all the investors of the company existing would be getting the link of the same through the mail. Thank you. Now I would like to hand over the same to Anand. Right? Thank you. Please proceed with. Yes, thank you. Thank you. It's very remarkable presentation, covers almost entire journey of our company along with all the financial data. Now it's my pleasure to introduce our Chairman and Managing Director, Mr. Santosh Kataria ji. He is the eldest son of Mr. Ratanlal Kataria. He has around 22 years of experience in jewelry and plastic industry. He has been associated with the partnership firm Messrs. DP Jewelers since 2010. He is entrusted with responsibility to look after the administration and human resource function of our company. He is also responsible for the expansion and overall management of the business of our company. Now, without taking much of time, I am transferring this dais to Mr. Santosh Kataria ji, our CMD. Mr. Sahaj, you have raised the hand. We will take up you afterwards. Thanks for the same. Santosh ji, please, you can. Hello. आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज Yes, sir, आ रही है. Yes. Dear shareholders, it is matter of great pleasure to welcome all of you to join us on the investor meets, the meeting for discussions of financial years quarterly and the year ending. Before we start, I would express to my thanks to all of you for investing in our company and being a part of 4 years journey of achievements, growth, expansions, and the performance. Your company has beaten its own predictions of performance during the year ending of 22, and also overperformed since the listing of exchange in the mind of 2017. Over a period of 4 years, company has experienced all sorts of masala, which you will find in the Hindi movies. I mean to say that experience of good time and bad times. In the year October, we came the IPO with ₹28. The issue is over subscription more than 440 times, and by the times against the 16.16 crores asked by the company. It shows the confidence of investor on the company and promoters. Thank you very much for this. During the period of 4 years, your company has experienced the troublesome time demonetization changes of governments, policies on gold, introduction of GST, and outbreak of COVID-19. All these events could not be to growth of your company. Despite of so many challenges, your company has performed very well. Compare its peers and its own past performance. All this credit goes to the management of the company and its trusted human assets of more than 500 persons. In the year of 2007, when we came into public, we had 4 showrooms at Ratlam, Indore, Udaipur, and Bhopal. Today, we have 8 showrooms by adding new showrooms at Ujjain, Bhilwara, Kota, and Baswara. Our top line growth from company from 660 crores in 2018 to 1732 crores in 2022, and PAT was zoomed at 41 crores in March 2022 against just 8.1 crores. So was the EPA from 4.32 into 2018 to 18.41 in 2022. I would like to take the privilege in saying to you that your investment of ₹28 in the mid of 2017 has become ₹450 today, means more than 16 times, and it touched to then higher this the current month. It is itself, if I am not wrong. Thus market cap
of 63 crores in 2017 and grow more than 1,000 crores. Your company has also entered into the top 1,000 companies of the India. I would like to hand over to Mr. Host Anandji. Thank you, sir. Now we are moving to the last phase of this session, that is question answer session. Any participant, anyone who have any kind of question, you can raise your hand and it's request to IT team to unmute that participant and we will start the question answer session. So I think Sahaj has raised his hand. So I'd like to unmute Sahaj and ask him a question. Sahaj and Mr. Arpit Agrawal, two participants have raised the hand. Even Vijit Ramawatji has also raised the hand. So one by one, I request IT team to unmute that participant and then we'll start the question answer session. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. Ji. I wanted to understand that although the companies practice to mitigate the gold price fluctuation, but some other organized player in the industry follow the different method, like using gold on lease or entering into a derivative transactions. So the present practice which companies follow, what are the advantage on that practice? Okay. Yes, I would like to ask Mr. Sanjay Kataria to answer the question, please, regarding gold on lease. Hello, are you listening? Yes, sir. Yes. Actually, जो हेजिंग वाला आपने जो प्रश्न किया है कि अदर जो जितने भी कंपनियां हेजिंग कर रही है, उसमें हमेशा से हमने देखा है कि गोल्ड का प्राइस ऑलवेज बढ़ता ही रहता है, कभी ये कम होता नहीं है। अर्लियर ये प्रैक्टिस हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी करके देखा था। उस प्रैक्टिस में हमें जो इंटरेस्ट और उसके अलावा जो हेजिंग का जो लॉस किया था, उससे हमारी कास्ट लगभग 20% एंड अबाउ की हुई थी। अभी भी जब हमें सोना लेना होता है आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर, हमें उसको वापस से कंप्लीट करना होता है। वो 6 महीने या साल भर के लिए हमें मिलता है, उस दिन हमें वापस से डिलीवरी देना होती है या उसको रेट कट करना होता है। अल्टीमेटली जब हायर रेट था, मार्च में भी हम लोगों ने देखा था कि जो लास्ट ईयर से जो प्राइस इंक्रीज हुआ था, मार्च में काफी ज्यादा हो गया था। जिन लोगों के हेजिंग वाला था, उन लोगों को काफी लॉस होना पड़ा था और अल्टीमेटली वो लागत हमारी करीब 25% से अधिक की बैठती है। इस वजह से हम लोग ये नहीं करते, जितना डे टू डे होता है हम उतनी इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं और उसके अलावा जब रेट कम लगता है, हमें नए एक्सपेंशन करने होते हैं तो इन्वेंट्री बिल्टअप करते रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 3 से 7 शोरूम किए थे, तो हमारी इन हाउस इन्वेंट्री प्लस जो बढ़ा हुआ था वहीं से हम लोगों ने कर दिया था। 7% में बैंक का लोन हमें मिल जाता है, तो उसके कारण से हमें ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देना पड़ा और अल्टीमेटली सोना बढ़ता ही रहता है और आगे भी मुझे लगता है कि ये बढ़ता ही रहेगा। इंडिया में कभी भी सोने का दाम कम नहीं हुआ है आज तक की हिस्ट्री में। Okay. I hope, sir, the answer was satisfactory. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes. Okay. We can move to the next question by Mr. Vijit Ramawat. So please unmute yourself. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, congratulations to Team DP for a good set of number. Growing our top line from 450 crore in 2017 to 732 crore in 2022, almost 4 times in 5 years. And profit is 8 times from 4.5 crore to 40 crore. And congratulations once again for giving first time dividend. And my best wishes for 3,000 crore top line target for 2025. मेरे 2 क्वेश्चन है, I have 2 questions. First, the company expansion plan in a 2 part. One is कि हम existing store में भी कुछ expansion करेंगे और नए store भी ऐड करेंगे. Yes. हम most probably हमारा expansion plan सबसे पहले अभी रतलाम को लेकर है। हम चाहते हैं कि रतलाम में जो हमारा एक स्टोर है, वो जो अभी काफी छोटा है, उसको हम सबसे पहले बड़ा करने की उसमें है और उसके बाद फिर हम नई सिटी को एड ऑन करने के उसमें है।
रतलाम में क्या प्लान है आपके, अगर कितना अभी है और कितना कैपेसिटी एक्सपांड करेंगे उसको? रतलाम में अभी तकरीबन हमारा 2200 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो उसको हम मोर देन 5 टाइम्स तो करना चाहेंगे कम से कम। विथ माय बेस्ट नॉलेज रतलाम का बहुत अच्छा, है। रतलाम इज पर स्क्वायर फीट वेरी हाई पर स्क्वायर फीट सेल आता है रतलाम का आपका, इज ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट सेल फ्रॉम रतलाम। रतलाम सबसे हाईएस्ट आता है आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट? यस, रतलाम एक्चुअली हाँ, हमारा सबसे ज्यादा सेल रतलाम का ही है और रतलाम के ही बेस पे हम लोगों ने ये सारे एक्सपेंशन किए हैं। पहले रतलाम में आज भी हमारा देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेल वहीं आ रहा है। और उसके अलावा जितना भी जगह के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम 2 या 3 गुना बिजनेस ले सकते हैं, जो हम जगह के कारण नहीं ले पा रहे हैं। आज पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है वहां पर, दूसरी फैसिलिटीज नहीं है, वॉशरूम, मतलब एक पुराना हो पाता था, किंतु उसके अलावा अब जगह की रिक्वायरमेंट, नई जनरेशन, सबको स्पेस चाहिए, वेटिंग ग्राउंड चाहिए। तो उसके लिए हमको वहां लगता है कि दूसरी जगह जाके इतना धंधा करें, इससे यदि रतलाम में कर ले तो 2 से 3 टाइम्स धंधा यहीं पर आ जाएगा। तो हम लोगों ने प्रायोरिटी यही डिसाइड किया हुआ है कि रतलाम में फर्स्ट है, इसको बड़ा करना है। ये कब तक होने का उम्मीद रहेगा? इस साल में हो जाएगा? इस साल की उम्मीद है कि इस साल के एंड तक हम इसको कर लेंगे। और मतलब 2200 है तो 5 टाइम मतलब अक्रॉस 11,000 के आसपास आपका साइज हो जाएगा, 10-11,000 का। ऑफिस प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीजें प्रॉब्लम हो रही है, तो जब जाएंगे तो ये आगे का विजन 2030 तक का विजन रख के ही जाना है कि आगे 10 साल के नहीं होना है और इतना बिजनेस आएगा, और वो सब सोच के ही करना है। इतना बड़ा काम बार बार कर सकते हैं। Yeah, Ratlam is a very big center for this. Yes, रतलाम के हिस्से पे काम हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन और है कि इसके अलावा कौन सी नई सिटीज ऐड करेंगे या कितनी सिटीज इस करंट ईयर में ऐड करेंगे? नहीं, एक्चुअली सोर्स के हिसाब से हम लोग वही सोच रहे हैं कि जैसे जो फंड हमारे आ रहे हैं उस हिसाब से हम लोगों ने अभी ये बहुत ज्यादा दूर जाने का तो नहीं सोचा है, किंतु जो पास में ही सिटी है जैसे नीमच या हमने गोधरा, दाहोद या जो आजू बाजू की सिटी है, वहीं पर हम लोग एक्सपेंशन प्लान करेंगे। और एक तो हमारे उसमें है कि हम इसको जल्दी ही उसको फाइनलाइज करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। श्योर। सेकंड इज आपका टोटल 40,000 स्क्वायर फीट है, पर स्क्वायर फीट आता है करीब 4 लाख रुपए सेल आता है, 4.25 लाख सेल आता है, जो कॉम्पिटिटर से ऑलमोस्ट डबल है आपका जी। तो कैसे कर लेते हैं ये, और इसमें और मार्जिन कैसे अपने एक्सपांड हो सकते हैं यहाँ से, और कैसे बढ़ सकते हैं अपने पीयर से? तो अपने मार्जिन बहुत अच्छे आते हैं, मगर फिर भी और कैसे अपन बेटर हो सकते हैं मार्जिन में? यहाँ पर 2 चीज में आपका ध्यान चाहूंगा। पहला तो ये कि आपने जो बोला है कि कैसे सेल को करते हैं, तो एक्चुअली क्या अपने आप में डीपीएफ ब्रांड बन चुका है। यहाँ हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है सेंट्रल इंडिया में कि डीपी क्या है। यहाँ पर कोई भी आएगा तो वो डीपी के नाम से सामान और ज्वेलरी परचेस करके जाएगा, उसको डीपी है तो ट्रस्ट है। तो उस वजह से हमें सेलिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है कहीं पर भी। मार्केटिंग ठीक है हम लोग करते हैं, कस्टमर बाहर आया उसके दुकान पर है ही है तो वो आएगा तो सही डीपी पर, किसी का कुछ भी फंक्शन होगा तो वो डीपी पर एक बार विजिट करेगा, और हमारा फुटफॉल कन्वर्जन रेशियो वो काफी हाई है इस इंडस्ट्री में। तो हमें लगता है इस मार्केटिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एक रिजनेबिलिटी के लिए हमारे यहाँ कस्टमर आ रहा है, उसको ये पता है कि डीपी पे कोई भी जाएगा तो बहुत रिजनेबल और बहुत अच्छी ज्वेलरी कम दाम पर और रिजनेबल दाम पर मिलेगी। हम लोगों का अभी तक भी टारगेट यही था कि कम मार्जिन में अधिक बिजनेस लेना है। मुझे ये नहीं करना है कि मैं बिजनेस तो कम करूं और मेरा मार्जिन बढ़ा लूं, और वो करने की वजह से ही हम लोग यहाँ इतना बिजनेस कर पा रहे हैं। आज बिजनेस बढ़ाने मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा ये है कि टारगेट, जैसे लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स पीएटी 30 करोड़ था, वो इस बार 40 करोड़ हो गया है। मेरा तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैं नंबर्स देखता हूँ, मैं परसेंटेज में नहीं जा रहा हूँ कि मेरे को कितने परसेंट हुआ या क्या हुआ है। ओवरऑल यहाँ पर हम लोग है ना हमारा एसेट टर्न के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, एसेट का रिटर्न कितना अच्छा हम लोग दे सके, हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। मेजोरिटी हमारा फोकस वो रहता है। नॉट कि हम लोग मार्जिन कम रखते हैं, बट स्टॉक रोटेशन एज कंपेरेटिव टू अदर पीयर्स सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाएगा इंडस्ट्री में तो डीपी का होता है। यस, वो तो है, राइट, वेरी ट्रू। सो वी आर फोकसिंग ऑन एसेट रिटर्न, तो ओवरऑल एसेट पर रिटर्न हम कितना ज्यादा दे सकते हैं। हम लोग 22% पर है, बट वी आर ट्राइंग कि हम लोग 24%, 26%, 30% तक हम लोग पहुंचे, तो हम लोग उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यस, यू आर वेरी गुड ROE and RONW. Yeah. Thank you. This is from my side. Thank you. Now can we take up the question of Arpit Agrawal ji? Arpit ji, you can. Yeah, thank you Anand ji, and congratulations team DP. बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और
जब हम दूसरी ज्वेलरी कंपनीज के सामने देखते हैं आपका सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं. सो मेरे ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन तो विजित ने पूछ लिए, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस है, अब आपका आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 75 करोड़ का है. सो वो ऑब्वियसली एज साइज ग्रोज आपके पास इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो मैंने प्रेजेंटेशन में देखा कि आपको एक स्टोर खोलने में 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत आती है. तो एक तो आप जो आसपास के छोटे शहर हैं उनमें आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो रतलाम के बाद सबसे बड़ा जो नंबर है वो इंदौर का है. तो क्योंकि जो बड़े शहर है वहां पे उसकी कैपेबिलिटी और ग्रोथ की बड़ी रहती है. रतलाम तो चलिए आपका गढ़ है तो वहां पे ब्रांड बहुत स्ट्रांग है. तो और कौन से बड़े शहर हैं, जैसे मैंने पढ़ा था अभी प्रेजेंटेशन में कि छत्तीसगढ़ भी आप सोच रहे हैं, तो और कौन से ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पे एमपी या गुजरात या इधर के जहां आप पहले प्लान करेंगे अगले 3-4 साल में, कि रायपुर हुआ या कहीं गुजरात की कोई सिटीज, तो ऐसे कोई शहर आपकी नजर में जहाँ पे आप ग्रोथ प्लान कर रहे हैं? संतोष, हेलो, आवाज आ रही? यस, आ रही है सर. हाँ जी. तो आपका जो क्वेश्चन है कि हम ऐसी कौन सी सिटी देख रहे हैं कि जहाँ पे एक्सपांशन, तो ऑफ कोर्स मतलब हमारा जो हम जो चाह रहे हैं अभी मैक्सिमम टियर 2 टियर 3 सिटी में ही जाना चाह रहे हैं. एंड बड़ी सिटी में अगर आप देखें तो रायपुर जबलपुर भी अच्छी है, लेकिन अभी उस पर हम ऑलरेडी उस पर सर्वे चालू है हमारा सारी चीजों पे. एक बार हमारे अगर उसमें क्राइटेरिया में फिक्स आते हैं तो फिर हम उस साइड एक्सपांशन की प्लानिंग करेंगे. अभी जो हमने 2 स्टोर एवरी ईयर का जो प्लान किया है वो लार्जली वेस्टर्न एमपी में ही रहेंगे. दैट इज दी जो अभी आप 2 हर साल आप जो प्लान कर रहे हैं, तो मोस्टली सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया हम लोग फोकस करेंगे. एमपी, राजस्थान, गुजरात इन सीरीज. सो मोस्टली वी आर फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया. दूसरा सर, जैसे आज कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ रहा है. अगर आप इंदौर में भी देखेंगे तो तनिष्क और जितने बड़े ब्रांड आ रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा आप सेंस देंगे कि डिजाइन वगैरह के लिए हमारे पास कितनी टीम है और किस तरह से हमारा एज डिजाइन में कैसा रहता है. कि आपका ट्रस्ट तो बहुत स्ट्रांग है, वहां पे किसी से पूछे तो डीपी का बहुत ट्रस्ट है, लेकिन आजकल का जो नया कस्टमर है वो डिजाइन पे बहुत फोकस करता है. तो उसमें अपना क्या स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा अगर उस पर आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा. तो नॉर्मली हमारी जो टीम है वो कंटिन्यूसली डिजाइन के ऊपर काम करती रहती है. वी हैव अ वेरी गुड मर्चेंडाइजिंग टीम फॉर गोल्ड सेक्शन, डिफरेंट टीम. डायमंड सेक्शन के लिए हमारे पास अलग टीम है, सिल्वर के लिए हमारे पास अलग टीम है. एंड वी आर कंटिन्यूसली विजिटिंग ऑन द शोज. जितने भी ज्वेलरी शोज होते हैं हमारी टीम सारे शोज में पार्टिसिपेट करती है. एंड हम लोग हमारे जितने जो वेंडर है जो शायद हमें भी सप्लाई करते हैं, जो टाटा को भी सप्लाई करते हैं, जो मलाबार को भी सप्लाई करते हैं, ये काफी सारे हमारे कॉमन वेंडर है. तो हम हमारी ब्रीफ अकॉर्डिंग टू हमारे एरिया में कौन सा प्रोडक्ट चलता है कौन सा नहीं चलता है, हम लोग हमारी ब्रीफ देते हैं. और उसके हिसाब से हम लोग हमारी पूरा डिजाइनिंग उनके साथ में करवाते हैं. और हम लोग कंटिन्यूसली अपडेट होते हैं मार्केट में, और नया ट्रेंड क्या आने वाला है, फ्यूचर में क्या डिजाइन चलने वाली है. और काफी सारी जनता जो बॉलीवुड से इंस्पायर होती है, तो वो ज्वेलरी भी, वो ट्रेंड भी हम लोग ध्यान में रखते हैं. सारी चीजें डे बाय डे टू डे हम लोग अपडेट होते हैं, हमारी टीम अपडेट रहती है. और डिजाइनिंग पार्ट तो मोस्ट इंपोर्टेंट है. प्राइस सेकेंडरी आता है, बट आज की तारीख में एज ए फीमेल की हम लोग बात करें तो उसके लिए सबसे पहला इंस्पिरेशन डिजाइन होता है. अगर डिजाइन अच्छी है तो ही वो आपके पास में आएंगी, तो हमें वो सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है डिजाइन का. आपके पास इन हाउस डिजाइन टीम विकास जी खुद की, मतलब ऑन योर रोल? जी, हमारे पास में इन हाउस डिजाइन टीम भी है, खुद के डिजाइनर्स भी है हमारे पास में. और लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे स्पेसिफिकली बिकॉज आपसे बात हो रही है, तो कोई स्पेसिफिक रीजन है कि हमने जो हमारा जो छोटे स्टोर का जो ज्वेलरी का बिजनेस है वो हमने सेपरेट किया, तो उसका क्या रीजन है? बिकॉज अल्टीमेटली तो लिंक बिजनेस है, सिमिलर बिजनेस है. सो दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट फोकस. हम लोग को लगता है कि जो ज्वेलरी इज लाइक ऐसे इमर्जिंग थिंग. अभी वो इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी के साथ में. अगर हम लोग, दिस इज अ प्योरली ई कॉमर्स थिंग. तो अभी ई कॉमर्स मैच्योर मार्केट है, अभी वो पूरी तरीके से मार्केट रेडी नहीं है. तो थोड़ा उसमें इनिशियली शायद बर्निंग हो सकती है अगले 1-2-3 साल के लिए. तो डीपी आभूषण के जितने स्टेक होल्डर है उनको हम लोग वो सब में न डालते हुए हम लोग उनको फ्री रखना चाहते थे. दैट्स व्हाई वी थिंक कि अभी जब अगर इसको बिल्ड करना है तो पहले हम लोग अपने फोर्स से इसको बिल्ड करते हैं, देन फिर इसको फ्यूचर में देखा जाएगा कि कैसे इसको आगे हम लोग लिक्विडेट करते हैं या कैसे इसमें आगे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं हम लोग. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर टेकिंग द क्वेश्चन. Now I am requesting Mr. Rahul Gadia to raise his question to the management. I'm audible? Yes, sir. You are audible. Congrats entire DP for robust performance.
My question is that now DP market cap is almost 1,000 crore. Recently, in last 2 months, I came to know that Abhushan has been entered into top 1,000 listed group company, which is very good for a small town like Ratlam. Being a person of capital market, I would like to know what are the various we have many option to raise the fund like QIB, and you are getting various option of QIB by via fund manager, mutual fund, PMS, and DPI is now almost 5 years since listing. So what companies now looking to raise the fund in the form of QIB for further speedily development of a company? Like recently, Thangamali has raised QIB. My question is that what is our plan to raise the fund in current financial year for expansion of a company? Sanjay sir. Santosh, yes. Hello. Yes, sir. You are audible. Vikas. Hello. Vikas. Yes, sir. Yes. So Again. Can you repeat the question? Can you repeat the question? Yes. Again. Okay. Being a person of capital market, I know you will get various option of QIB via fund manager, mutual fund house, PMS to raise the fund for the company for further development of Abhushan. So my question is that what is your plan of regarding QIB or to raise fund or to dilute the stake of company for further development or for further expansion of Abhushan? So we are seeking the good opportunity. We are just looking forward. We have met the people कि हमें कौन सी एक अच्छी opportunity मिल सकती है. As of now, we don't have any concrete plan right now. But yes, we are seeking the good opportunity. Okay. So in future, if you have any opportunity related to QIB, we would go through the terms and the conditions. And if it is in the beneficial of the company, we would go with the same. And apart from that, having a concrete expansion plan and the located stores, we have the same expansion plan and we will go for the QIB approach. Okay. Okay, can we now, Mr. Raju Banwal, you have some questions, sir. Hello. Yes, Mr. Raju. Yeah, hi. Thanks for the opportunity. Yes, so I sir. have one question that during the quarter, the sales of the company declined by 26% and 34% on a sequential basis. So if you could quantify how much was the volume driven and value driven? So what was the volume driven during the quarter? Can you please repeat your question, Mr. Raju? Yeah, I'm asking during the quarter, the sales of the company declined 26% in Q4 on a year-on-year basis and also 34% on a sequential basis. So if you could quantify how much was value driven and volume driven, what was the volume driven during the quarter in terms of volume? I would request, can you please drop a mail to the company's compliance officer? We will share the details of the volume metrics of the quarter. Okay. And the second thing that how is the current sales scenario, right? So in the Akshay Tritiya, how was the sales and how was the footfall in the April and May month? Sanjay, please answer the Akshay Tritiya sales and regarding the current sales scenario. Again, please. Regarding the Akshay Tritiya sales and the current sales, how it is going in the So this time we celebrate the Akshay Tritiya first time after 2 years after COVID. We celebrate the very धमाकेदार Akshay Tritiya entire India. I think बहुत समय के बाद में ऐसी Akshay Tritiya देखने को मिली है. And the season is going very well. First quarter is going very well. And overall, how was the footfall across the all the states? Can't hear you properly. आपकी आवाज बराबर से नहीं आ रही, Mr. Rajiv.
It's okay. Let's shift to another question, Anand bhai. I think now no one has any question. Abhishek Jain. Abhishek Yes, Jain. Abhishek Jain in a chat box. Okay. Mr. Abhishek? Yeah, am I audible, sir? Yes, you are audible. You can ask a question, no issue. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम एक्सपेंशन में इतना स्लो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लोज भी अब कंपनी के काफी अच्छे हो गए हैं और ब्रांड आपने जिस तरह बताया ब्रांड है, ट्रस्टेबल है और सारे मैट्रिक्स पे आप बेस्ट हैं, तो क्योंकि अगर गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है तो उसके बाद केपेक्स की रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा हो जाएंगी अगले सालों में, तो इसलिए और बैंक डेट भी आपको 7% पे मिल जाता है, तो एक डेट और इक्विटी का सही रेशियो लेकर आप थोड़ा एक्सपेंशन को फास्ट क्यों नहीं करना चाहते? एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा तो फंड आ नहीं पा रहा है उसमें, जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो हमारे पास रिजर्व बच रहा है, करीब इस बार भी आप देखेंगे तो 40 करोड़ रुपए आए हैं इस साल में। हमने ऑलरेडी जनवरी में तो हम लोगों ने बांसवाड़ा स्टार्ट कर ही दिया है। जी, आर यू लिसनिंग ना? हाँ जी सर। तो इस बार भी 40 करोड़ आए हैं, हमने बांसवाड़ा ऑलरेडी प्लान कर दिया, रतलाम का नया एक्सपेंशन कर रहे हैं। बैंक से जितना हमको लोन लेना था वो जितना हमको बैंक देता है वो तो सारा कर ही दिया है। इसके अलावा जो हमारा स्कीम्स चल रही है उसमें जो फंड आएगा उससे नया प्लान कर रहे हैं। बाकी फंड कहीं से अरेंज करना और उतना होना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान हो पा रहा है। यदि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिली और डेफिनेटली फंड मिले तो हम लोग उसको थोड़ा सा फास्ट और एक्सपीडाइट कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। One more question is in chat box from SK. So if he is connected, then please ask. Otherwise, I can repeat this question. Mr. SK. You can ask the question. Yeah. So the question is, when is the commercial launch of e-business? I think that's not relevant. Okay. And okay. Then another question is from Vijay Swamani. Any plan of stock split in future? कोई अपन ने जो बताया कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज या ऐसा कुछ आएगा तो अपन उस पर देखेंगे कि स्टॉक को क्या करना है। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं है। Okay. As of now, we don't have any plan for stock split. Yeah. I mean, our stock prices are not. Yes. So stock split का plan will plan out in future. In future, yes. Right. One more question, usual question from all the investors, that is any probability of dividend? Didn't we have declared this year? We have 10% declared dividend already. Okay. So as such, now there is no question in a chat box also. And from participant, if you have any kind of question, then you can raise. Otherwise, we move to the next. Okay, so team, no one have any kind of question. So now we are concluding this question answer session. On behalf of now DP Abhushan Limited, I thank all the panelists, shareholders, and participants for attending this meeting. Now, with the permission of host, that is me only, and I conclude this meeting with the vote of thanks. Thank you, everyone. Thanks for. Thank you. Thank you आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you all. Thank you. Thank you all. IT team, you can now. Thank you. It's a request to IT team to leave this meeting, end this meeting. I will end this meeting. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. The recording has stopped.